करने के बाद आपको मोबाइल पे कहीं पे भी साइड में टेबल पे रख दो, उसके बाद आपको जहां जाना चले जाओ, करना है करो, बस एक बार लाइव स्ट्रीम को ऑन करके छोड़ दो। अब इससे क्या होगा पता है? अब ध्यान सब इससे क्या होगा कि आपका लाइव स्ट्रीम चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम को देखेंगे, ठीक है, ये लाइव स्ट्रीम होगा तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक चलेगी, लोग आपको वीडियो को देखेंगे, जितना टाइम देखेंगे उतना आपको वॉच टाइम मिलेगा और यहां आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, बस आपने तो वीडियो बना के ऑलरेडी डाल दिया है, बस लाइव स्ट्रीम चलेगा ऑटोमेटिक, जितने भी लोग आएंगे देखेंगे, आपको वॉच टाइम पड़ेगा। और भाई सब क्या करना पता है? जब लाइव स्ट्रीम को कट करोगे ये वीडियो को आप पब्लिश करते रहना, अनस्टेड या प्राइवेट मत करना, ठीक है, क्योंकि अनस्टेड या प्राइवेट का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, तो पब्लिश कर दो, डेली 1 घंटे करके करना, देखना आपको बहुत तेजी से वॉच टाइम मिलेगा। एक दिन में 400 500 ट्राई करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस आप क्या में होता है। तो ये डेली फ्लक्चुएशन के बेसिस पे होता है 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका पीक लेवल जो होता है 6 पीएम से लेकर मतलब 6 पीएम से लेकर 10 पीएम तक, मतलब 6 बजे से 10 बजे तक इसका पीक फ्लक्चुएशन होता है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the variation of temperature in the body. If the temperature 90 अगर इस बीच में रहे तो इसको पायरेक्सिया बोला जाएगा, और लेकिन इससे ज्यादा हो गया तो हाइपरपायरेक्सिया बोलेगा, जो कि सर्टेन कंडीशन में होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे मलेरिया, सेप्टिसेमिया एंड हीट शॉक। And if the temperature is lies between the 98 degree Fahrenheit to 95 degree Fahrenheit, then it will be known as subnormal. But if it is further less than the 95 degree Fahrenheit, then it will be considered the hypothermia. And hypothermia will be in case of the myxedema coma, hypoglycemia, and blood loss. So coming to the next attribute, that is the onset. तो ऑनसेट पे मोटे मोटे हम क्या देखते हैं, तो ऑनसेट मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब कितना जल्दी हुआ है, ग्रेजुअली हुआ या सडनली हुआ। तो there will be discussed abrupt and the gradual. So in case the abrupt, it is the condition the individual is getting sudden onset of the fever. So it will be it may be caused by the Escherichia coli pyelosis and the pneumonia. And in case of the gradual parameter, it will be miliary, tuberculosis, and the typhoid. So there are few importance here. One most important point is that the step-ladder pyrexia. So what is step-ladder pyrexia? It is the characteristic features of the typhoid. तो ये बहुत important है, भागों में या उस MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो step-ladder features of typhoid indicate that there is a gradual increment of the body temperature, like 101 degree Fahrenheit from 100 degree Fahrenheit to 101, and next day 102, next 103. It's also known as the Starkest phenomenon. If you feel that you can never speak English fluently, I want to show you something. This is a recording of one of my students from 2020. So there was this driver, a cab driver. He got a booking of like around midnight. Yes. And the place where that was Yashwant. Okay, we have covered number 1, it is the temperature, and the number 2, onset. Coming to the next part, it is the time frame. So under the beginning of the time frame, we will be discussing two subheading, there is the alternating and the relapsing. Alternating क्या है और relapsing क्या है? So first we are interested to discuss about the relapsing. तो मेजर डिफरेंस रिलैप्सिंग और अल्टरनेटिंग में ये है, ये मेटर्स ऑफ डे। तो ये मेजरमेंट जैसे होता है तो दिन में मेजरमेंट होता है, जैसे कि पहले दिन में बुखार आया, सेकंड दिन अंडर भी
दो होता है, जैसे कि रेगुलर अल्टरनेशन एंड द इरेगुलर अल्टरनेशन। तो रेगुलर अल्टरनेशन में क्या हुआ, सपोज किसी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम फीवर 7 डेज से 10 डेज तक पीक में आया और कम हो गया, और फिर 7 to 10 डेज इसको बुखार नहीं हुआ, और फिर 7 to 10 या उस दिन में आ गया, तो ये रेगुलर अल्टरनेशन में आएगा। लेकिन व्हाट विल बी इन केस ऑफ द इरेगुलर अल्टरनेशन, सपोज किसी इंडिविजुअल को 3 दिन तक रहा बुखार, उसके बाद 10 दिन तक गायब हो गया, बुखार नहीं है, उसके बाद 6 दिन तक आया और 2 दिन तक नहीं आया, तो इधर मतलब इरेगुलर वेरिंग हो रहा है, मतलब वेरिंग ऑफ द फीवर इन इरेगुलर मैनर। So here also one important term is defined for the regular retention of the fever, that is the pale H10 fever. In case of the lymphoma or skin, it is important to remember that. And in case of the tuberculosis, we have covered the third parameter also, that is the time frame. Now coming to the next parameter, that is the fluctuation of the variation. So before coming to the theoretical question, we are going to discuss this graph. तो इस ग्राफ में क्या हुआ है, सपोज ये बेसलाइन है बॉडी टेम्परेचर का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक ब्लैक कलर में दिखाया गया, मतलब इस ग्राफ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक पोर्शन शो कर रहा है बेसलाइन को टच करके, और ये जो ब्लू और रेड है, ब्लू और रेड ये देखिए बेसलाइन को टच नहीं करना है, ये ऊपर घुस जा रहा है, लेकिन इसका वेरिएशन कम है टेम्परेचर वेरिएशन, बट इसका वेरिएशन ज्यादा है। जैसे कि इसमें देखा जाए तो टच करेगा, बट इट विल बी accompanied with sweating। तो जब बेसलाइन टच करेगा तब इंडिविजुअल विल बी स्वेटिंग। In case of tuberculosis and septicemia, this can be seen. Okay, now coming to the next question, that is the rigor due to the constriction of the vessel. So rigor, what is rigor? It is it's a condition which is occurred due to the constriction of the skin vessels. So basically, it is the triangle to show the three parameters. That is the parasitic infestation, in case of the malaria infection, and the Escherichia coli, and this is the blood, and the infusion of the anti
pyretic drugs, familial infection, and the Escherichia coli, and is the transfusion of the blood, and the infusion of the antipyretic drugs, aspirin. तो इसको इंजेक्ट करने के बाद राइट देखने को मिल सकता है. So as we have discussed much about the fever, so now coming to the next and the final dimension of the attribute of the fever, that is the resolution. This can be by two methods, that is the crisis and the lysis. So ये crisis, what is crisis and the lysis? ये देखिए basis. Crisis is generally the speedy recovery of the individual from the fever within 6 to 12 hours. मतलब 6 से 12 घंटे के अंदर किसी इंडिविजुअल का बुखार को अगर कम कर दिया जाए तो उसको मतलब क्राइसिस के अंडर में आ जाएगा. ये कैसे किया जाता है? आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक और द एंटीबायोटिक जल्दी खत्म हो जाता है. बट व्हाट विल इन द केस ऑफ लाइसिस ओवर द फ्यू डेज मतलब क्या है? सपोज इंडिविजुअल का फीवर हुआ, 5 दिन चला गया, 6 डेज 7 डेज 8 डे ग्रेजुअली इसको डिक्रीज होने को होना है बेसलाइन तक के. तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि when the if the body is not responding to the drugs or the drugs have the low potency of the any reason may be there, and the reason is that in early days when there is no antibiotic and no proper antibiotic drugs, so it shows the lysis phenomenon, and this also responsible for the showing of the phenomena, that is staircase phenomena, that we have discussed earlier on the case of the onset. Sorry, not in yes, in the case of onset, gradual staircase is the characteristic of the typhoid. Okay, so it will be showing the staircase phenomena. So मतलब gradually decrease होगा, ठीक है, coming to the baseline gradually. So these are the few important parameters of the attribution of the fever to be characterized in the medicine OPD to diagnose the patient in a proper manner. So, thank you guys. So this data was recorded from the video lecture from the YouTube. So it's better to read from the book. Okay, thank you. Study well. Hello friends, welcome to MedicoExplorer. So today we are going to discuss the cholinergic drugs. So in this video we are going to cover the interacting, and on the basis of the there is synthetic. On the synthesis there is synthetic esters and the plant product that I calculate. So let's start the video. So as we all know that the cholinergic system is the part of the parasympathetic nervous system, and parasympathetic nervous system generally plays important role in the secretion of the acetylcholine. So therefore it is also known as another term, that is the parasympathomimetic. This word is very important, parasympathomimetic. So the common effect of the cholinergic drugs that can be remembered as the DUMBBELS, DUMBBELSS. So basically the key concept is that the increase in all body secretion. तो cholinergic ड्रग्स का इफेक्ट क्या होगा बॉडी में? तो बॉडी का जो सिक्रेशन है उसको इंक्रीज करेगा, जैसे कि D for diarrhea, Q for urination, M for meiosis. It's also known as the pinpoint. This is pinpoint eye. And B for bradycardia, increase in heart rate. Sorry, bradycardia, the decrease in heart rate, parasympathetic, no? And
B for further the bronchospasm, L for lacrimation, and 2S stand for the sweating and salivation. So now coming to the types of the cholinergic drugs, there is the directly acting and the indirectly acting. तो इसको डायरेक्टली में मतलब डायरेक्टली एक्टिंग से क्या समझ में आता है, तो इट इंडिकेट्स दैट रिसेप्टर एगोनिस्ट. तो रिसेप्टर एगोनिस्ट का मतलब क्या है, सपोज इज द synaptic membrane is the postsynaptic membrane. Suppose there is a exercises of the neurotransmitter that is led with acetylcholine. So it can be bind to the N receptor and the M receptor on the postsynaptic membrane. But in case of indirectly acting cholinergic drugs, what is happening here, that the anticholinesterase increase the endogenous acetylcholine. Suppose there is an enzyme known as acetylcholine esterase enzyme. It can be two types: acetylcholine esterase enzyme or another is butyrylcholine esterase enzyme. So anti-acetylcholine esterase, one type of acetylcholine drug that will destroy the acetylcholine esterase, and indirectly it will help to bind to the N and M receptor and further causing the action. So it is increasing the endogenous acetylcholine neurotransmitter. So now coming to the synthetic part, the esters. The synthetic one is the esters. Examples are acetylcholine, methanicol, carbachol, and the methacholine. So here we'll be looking on the basic superficially the idea. It is the shortest acting drug because it is rapidly degraded by the BCC, that is known for the butyl acetylcholinesterase, and bethanicol. What is bethanicol? It is actually the M3 agonist. M3 agonist, and it is used for the urinary retention. In some post-operative patient, there is loss of urination, therefore it is used to in the urine. So in case of carbachol is used for the mucis. There is the eye drop. Eye drop is in surgical procedure. The eye drop is applied so that there is a contraction of the pupils and no further complication in further cases. So now coming, this is the most important, that is the methacholine. So what is methacholine? That is the M2 agonist. तो इसका काम क्या है? इसका काम है मेनली डायग्नोस्टिक टेस्ट में, जो कि मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट. इस टेस्ट में हम 2-3 मिनट बाद देखते हैं. तो नेक्स्ट इज एल्कलॉइड, दैट इज द प्लांट प्रोडक्ट. क्या क्या है? पाइलोकेरिन है, एरिकोलिन है, निकोटीन है और मस्करिन है. तो पाइलोकेरिन किसमें? पाइलोकेरस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एरिकोलिन बेटेलनट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. निकोटीन दैट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टोबैको प्लांट. ये also मतलब it is also used to treat the patient of the smoking addicted patient. And muscarine is obtained from the poisonous mushroom. Although this is not an plant, but it is involved here because it is a nasal product. Nasal product. So now coming, what is methacholine used for? That is the M2 agonist diagnostic test for the asthma. So methacholine challenge is nothing but it is the inhalation of the methacholine. It's also known as the provocative test to diagnose asthma. तो इसमें क्या किया जाता है? देखिए, सपोज M3 रिसेप्टर होता है. M3 रिसेप्टर होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रोंकस में वो मतलब प्रीडोमिनेंट होता है. बट इन केस ऑफ द inflammation of the alveoli or the lungs, there is also involvement of the M2 receptor, and this methacholine is targeting the M2 receptor and increase the contraction, and it is complicate further. It is going to further complicate the condition. Therefore, it is asked for the patient that to inhale the methacholine to test whether the patient is suffering from the asthma or not. Therefore, it is a provocative test to diagnose.
and it is challenge because it is given to the patient in a way of challenging the condition. So basically, in this lecture, it's much only. So in next lecture, we will be discussing on the this pilocarine drug. This is very important. So thank you for watching the video. Study well. Thank you. Hello, Medicos. Welcome back to MedicoExplorer. So today we are going to discuss the drugs pilocarpine. In our last lecture, we were discussing about the cholinergic drugs, the types of the cholinergic drugs. There was the direct acting and indirect acting, and the plant-based or whether it is synthetic or the natural. So in the category of the synthetic, the natural, that is the alkaloid, natural alkaloid, the pilocarpine is the one of the most important drugs used in the OPD. So before going to the main part of the video, just introduce to the pilocarpine. So it is the drugs which is come in the second position in term of short acting. After steroid, it takes the second position of shortest acting drugs. तो इसको मतलब जल्दी जल्दी खत्म कर देता है, मतलब नलीफाई हो जाता है. तो इसका यूज में टॉपिकल आई ड्रॉप्स देख सकते हैं 0.5 to 4% स्ट्रेंथ में यूज किया जाता है. ये ड्रग ऑफ चॉइस है ब्यूटी के के. और ये ग्लोकोमा में यूज किया जाता है काउंटरएक्ट ऑफ द मिड्रियाटिक इफेक्ट. तो मिड्रियाटिक इफेक्ट जो है मतलब पिपिलरी डायलेशन बड़ा हो जाता है, तो ये देने से पीपल मतलब म्यूसिस हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है. एंड ब्रेक द synesthesia. So what is synesthesia? It is the condition in which the patient is suffering from the in next there is increase of the lacrimation, sweating, salivation. So here it is given that in case of in diagnostic case, the pilocarpine can also be used. तो ये कैसे किया जाता है, जैसे कि पाइलोकार्पिन को मतलब यूज किया, हाँ तो एडमिनिस्ट्रेट किया, तो ये इंक्रीज करेगा लेक्रिमेशन. तो लेक्रिमेशन जब देखिए मतलब टीयरिंग जब होगा ना, जो नॉर्मल टीयरिंग है मतलब उसके साथ कंपेयर करेगा फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस. Subsequently for the sweating and the salivation in the same way. So now coming to the therapeutic part, there is two important disease, that is the cystic fibrosis and the Sjogren syndrome. Which and it is very important for Viva, university exam, whatever you can say. This is the cystic fibrosis and the Sjogren syndrome. In this type of syndrome, there is condition like dry mouth, which is known as xerostomia, and dry eyes, that is known as the xerophthalmia. तो ये दोनों केस में क्या होता है, हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में पाइलोकार्पिन को यूज करते हैं. समझ में आया? बट नाउअडेज इन द मार्केट देयर इज अ न्यू ड्रग नाम दैट्स सेविमेलिन. तो इसको भी याद रखना चाहिए हमको. तो इधर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटिव्स. तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटिव क्या है, सपोज ये पाइलोकार्पिन है, तो पाइलोकार्पिन तो ठीक सही चल रहा है ना, तो अगर ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेटिव में देखा जाए तो इसको ओरली नहीं देना चाहिए और इंजेक्शन के थ्रू पेरेंटरल यूज के थ्रू नहीं देना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इट कॉजेज द सीजर, सडन एक्साइटेशन कर देगा ब्रेन में. तो ये बेसिक पॉइंट है याद रखने का. सेकंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग्स टॉपिकल आई ड्रॉप में यूज किया जाता है. म्यूटिक मतलब ड्रग ऑफ चॉइस म्यूटिक एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है. ग्लोकोमा काउंटरएक्ट फॉर द मिड्रियाटिक इफेक्ट, ब्रेक द सिनेशिया. लेक्रिमेशन किस किया जाता है, करता है स्वेटिंग, salivation, and for this it can be used in the diagnostic purpose. And in case of xerostomia and the xerophthalmia, there is the dry mouth and the dry eyes, the pilocarpine is used as drug of choice. And new drug is the sevimelin. And in contraindicative, there is no oral administration, no injection because of seizure. So in our next lecture, we will be discussing about the smoking de-addiction. Smoking
ई एडिक्शन, धूम्रपान से कैसे छुटकारा मिल सकता है, उसका थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट जो भी वगैरह हो उसको डिस्कस करेंगे. So till then, thank you guys for watching the video. So I recommend you to study from the book and just see the topic from here, and you can take over from here. Thank you guys. Study well. Hello friends, welcome back to MedicoExplorer. So today's in this lecture we are going to discuss the topic antiseptics and the disinfectants. So I have already made a video, but that video was not recorded on technical issue. So we are going to discuss this antiseptic and the disinfectants. So let's start the video. So from the definition, what is disinfectants and the antiseptics? So the term antiseptic and the disinfectant cannot an agent which inhibit or kill the microbes on the contact. So here the cannot what means implying. So it implying something that the agent which inhibit or kills. जैसे मारता है ये नहीं तो उसको स्टेट कर देता है, मतलब प्रोटीन वर्क करता है. So convention there is two terms has been being used, that is the antiseptic and the disinfectant. So agent used on the living surface is the antiseptic, and the agent used on the inanimate surface, that is the non-living surface, the disinfectant. So what is now germicide? So germicide is basically the common word that is used for only to implying the antiseptic and the disinfectants. So now coming to the difference between the disinfection and the sterilization. तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसमें कंप्लीट किल हो जाता है, मतलब कंप्लीट किलिंग ऑफ द all form of the microorganism including the spores. So and in case of infection disinfection, there is the reduction in the number of the viable pathogenic microbes to a level that they don't possess a risk to the individual with the normal host defense. तो normal host defense एक इंडिविजुअल का है तो उसमें उस बैक्टीरिया या वायरस जो भी हो पैथोजन उसका ग्रोथ को एक मिनिमम नंबर पे लाता है ताकि वो कोई डिजीज कॉज नहीं कर पाता. So a good antiseptic and a disinfectant should be. So what are the criteria which make an antiseptic and a disinfectant better the good? So the chemically stable, cheaper, non-staining with agreeable color in the odor, sidal and not merely static and destroying is present. So sidal होना चाहिए, static नहीं होना चाहिए, मतलब मार दे पूरा. Active against the pathogen, subject bacteria and the fungi. Active event in the presence of the blood, cause, accelerate, etc. And the non-absorbable or the produce minimum toxicity. This is the 7 point. And the 8 point is the rapid action and the exerts sustained protection. तो protection भी चाहिए, तो the factor that makes an antiseptic more viable or better one. Now come to the next slide, that is the mechanism of action of the germicide are different, but can be grouped into these three. That is the oxidation of the bacterial protoplasm, जो कि प्रोटोप्लाज्म को ऑक्सीडाइज कर देता है, और denucleation of the bacterial protein or enzyme. And third one is the detergent like action, increasing the permeability of bacterial membrane. से membrane का permeability increase कर देता है, जो कि lysis में होता है. Next, what are the factors that modify the permeability of bacterial membrane? That are the temperature and the pH, period of the contact with the pathogen. Third one is the nature of the microbe involved. Microbe involved जो भी organism है उसका nature पे depend करेगा. Size of the inoculum, जो inoculum form होता है उसका size पे depend करेगा. The presence of the mass of the other organic matter, क्या क्या presence है उसमें भी depend करेगा. So now coming to the potency of the germicides. So what is potency? Potency मतलब इसका कितना ताकत है या कुछ रेफरेंस के हिसाब से उसका कंपैरिजन है, जैसे कि एक्सप्रेस बाय इट्स एनोल कोएफिशिएंट और द आर आइडियल वॉकर कोएफिशिएंट. तो दिस कोएफिशिएंट इज नथिंग बट the ratio of the minimum concentration of the drugs required to kill 24-hour culture of the B typhosa, that is the Salmonella typhi, typhus bacteria, in 7.5 minutes at 37.5 degrees Celsius to that of phenol under same condition. तो एक रेशियो है किसके बीच में, फेनोल के बीच में और
सपोज XYZ के एक ड्रग्स के बीच में जो कि सेल्मोनेला टाइप की बैक्टीरिया को 7.5 मिनट में मारता है 37.5 डिग्री सेल्सियस में। तो एक फेनोल और XYZ ड्रग्स के बीच का रेशियो है इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो नाउ कमिंग नेक्स्ट इज द थेरेप्यूटिक index. What is therapeutic index? This is the comparison of the concentration at which it acts on the microorganisms with that which produce local irritation, tissue damage or the interference with the healing. तो जो concentration में काम करता है is to जिस concentration में irritation to the body or the tissue is occurring, मतलब अच्छा और बुराई का बीच में जो रेशियो है उसको थेरेप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। तो इन द नेक्स्ट देयर इज द क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इन दिस टॉपिक द क्लासिफिकेशन इज more important. So remember the classification only. Phenol derivatives, the phenol, crazole, fluoroxylenol, hexachlorophene, and the chloroxylenol. So in second number there is the oxidizing agent. Potassium permanganate, hydrogen peroxide, benzyl peroxide. Under halogen there is iodine, iodophore, fluorine, fluorophores. Under biguanide there is a fluorohexidine, and under quaternary ammonium there is quaternary ammonium salt, there is the cationic salt, which is the cetrimide and the benzalkonium chloride. Under the soap there is soap of sodium and the potassium, long chain fatty acid. Under alcohol, ethanol and isopropanol. Under aldehyde there is a formaldehyde and the fluoraldehyde. Acid is the boric acid. So as we know from the NEET preparation, that is the boric acid at low concentration, this can be act as an food antiseptic for the eye. In case of metallic salt there is silver nitrate, zinc sulfate, etc. And in case of dye, that's the essential violet, acrylamide and the propylene. In case of the fluorine derivative, तो इसमें क्या आता है नाइट्रोफ्लोराजन. तो रिमेंबर the phenol derivative को याद पता रखते हैं oxidizing agent, halogen, quaternary ammonium salt. These are basically important. So read it from the books. I recommend you for read it from the book and remember these examples. So thank you for watching the video. Thank you. Meet you in the next lecture. Get up to 10% off on your first flight booking. Download the Make My Trip app now. Hello friend, welcome back to MedicoExplorer. So today we are going to discuss the laboratory procedure, collection, preservation and the processing of sample for PreSite. In this lecture we are going to discuss how to collect the sample, store the sample and transport the sample to the laboratory. Basically the samples will be included such that the stool, blood, fluid, tissue and the biopsy. I think the biopsy part will not be covered in this lecture. So before going to the lecture, I want to show you something that the containers used in the lab. So at the very first, this is the screw cap, is for the collection of the urine. मतलब ये यूरिन कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, या स्टूल कलेक्शन के लिए किया जाता है, और ये है रेक्टल स्वैप. रेक्टल स्वैप हम देखेंगे किसमें यूज किया जाता है बाद में वीडियो में लेक्चर में. और ये स्क्रू कैप ट्यूब जो कि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है स्क्रू कैप. तो बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाला है. तो व्हाट इज द थिंग्स यू आर गोइंग टू टेस्ट. So let's start the video. Collection of the specimen. So what does it include? इसमें हम देखने वाला है for successful isolation and the identification of the pathogens, accuracy is required. In selection of specimen collection time, storage method of dispatch to the laboratory, aseptic handling during all step of specimen collection.
तो जो चीज़ें हमें ख्याल रखना चाहिए कोई भी स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए या उसको लैब तक पहुंचाने के लिए, एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कलेक्शन टाइम, स्टोरेज, मेथड ऑफ डिस्पैच टू द लेबोरेटरी, मतलब कैसे लेबोरेटरी में उसको एसेप्टिव कंडीशन के द्वारा भेजा जाता है। The next section, what are the precautions in specimen collections? स्पेसिमेन कलेक्शन के टाइम में जो प्रिकॉशन हमको मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 में पॉइंट वाइज देखा हूँ जो कि ताकि हम लोगों को समझने में आसान हो। तो स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन, समझ में आ गया? एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए। स्पेसिफिक स्पेसिमेन शुड contain only those organism from the site where it was collected. तो uninterested organisms of the microbes should not be interfere or involved in the interested microorganisms. Therefore, there must be aseptic condition. To avoid contamination, discharge or ulcer material with skin commensals. So let's avoid this point. Coming to the next point, that is the specimen should be collected in dry, sterile, leak-proof container, free from all traces of disinfection. All these points are generally talking about the hygienity or the aseptic condition of the sample collection. तो इन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं डिफरेंट स्पेसिमेन एंड द कलेक्शंस। तो हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं, तो पहले हम देखने वाले हैं यूरिन, मिडस्ट्रीम। तो मिडस्ट्रीम क्यों बोला गया है, तो मिडस्ट्रीम बोला गया है तो यूरिनेशन के टाइम में जो पहले वाला यूरिन और आखिरी वाला यूरिन के बीच में जो यूरिनेशन होता है उस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए मतलब पेशेंट को बोला जाता है, क्योंकि उस यूरिन को प्रिफरेबली डॉक्टर से मतलब रिकमेंडेड हो जाता है। तो कंटेनर स्टेरल स्क्रू कैप विथ वाइड माउंटेड बॉटल। तो कंटेनर कौन सा यूज किया जाता है इन यूरिन कलेक्शन में, तो ये पहले दिखाया गया है। This is the container that is used for the collection of the urine. तो पेशेंट प्रिपरेशन, तो पेशेंट इज आस्क्ड, पेशेंट प्रिपरेशन में क्या बोला जाता है, मतलब पेशेंट को वो एडवाइस दिया जाता है कैसे मतलब जैसे सैंपल को कलेक्ट किया जाए, मतलब कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए, कुछ करना है कुछ नहीं करना है। जैसे मेल को बोला जाता है क्लीन ग्लैंड्स, जो कि पेनिस का ग्लैंड पेनिस को क्लीन करने के लिए बोला जाता है, और कलेक्ट द मिडस्ट्रीम यूरिन। तो मिडस्ट्रीम यूरिन वी हैव अंडरस्टूड। So in case of female, clean area around the urethral opening and collect the midstream urine. तो ये पॉइंट याद रखना कि midstream urine is a very important parameter that is used for collection of the urine. So transfer to the laboratory. तो within 2 hours at 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 घंटे के बीच में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रख के उसको भेजा जा सकता है। स्टोरेज प्रायर टू प्रोसेसिंग 24 घंटा at 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्पेसिमेन कलेक्शन ऑफ स्टूल। तो ये पट्टी आ गया हमारा फेवरेट। तो कंटेनर क्लीन एंड द लीक प्रूफ स्क्रू कैप विद वाइड माउंटेड कंटेनर। तो ये सामने वाला हिस्सा देखिए वाइड है ऐसा और नीचे थोड़ा नैरो है, ये स्टूल कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पेशेंट प्रिपरेशन में देयर इज नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन, मतलब कुछ खास नहीं है। और ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी within 24 hours at 2 to 8 degrees Celsius, and storage prior to processing is 72 hours at 2 to 8 degrees Celsius. Now coming to the part rectal swab. तो रेक्टल स्वैब में क्या होता है जनरली, इसमें हम यूज करते हैं rectal swab. This is the rectal swab container. It contains the ETM, that is the enteric transport medium, in which this part of the swab is inserted into the rectum posternal sphincter within 2 to 2.5 centimeter. That means 3 to 5 centimeter अंदर, मतलब 3 से 5 सेंटीमीटर अंदर इंसर्ट करा के उसको स्लोली मतलब जेंटली रोटेट किया जाता है 10 से 15 सेकेंड तक। उसके बाद उसको निकल के इसके अंदर डाल के
डाल के रखता है, लेकिन इसको अंदर डालने के समय ये मतलब इट शुड बी नोटेड दैट दिस मार्क शुड बी अबव द लेवल ऑफ द ब्रिम। तो ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी इसमें क्या है, 24 घंटे के अंदर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखना है, स्टोरेज में 72 आवर्स एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो रेक्टल स्वैब खत्म हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर। Now coming to the specimen collection of the blood and bone marrow. In this case, we use aerobic and anaerobic blood culture media set or vacuum tube with polyanethol sulfonate. Here the printing mistake is there, typing error. Polyanethol sulfonate. This name of the compound is to be remembered, polyanethol sulfonate, that is used in the vacuum for the collection of the blood in case of the blood and the bone marrow collection. So for the patient preparation, there is recommendation that the draw blood during febrile episode and collect 2 sets from left and the right arm. मतलब दोनों हाथ से लेना है खून, और एक टर्म मेंशन है जो कि फेब्राइल कंडीशन है। तो फेब्राइल कंडीशन एक फेब्राइल एपिसोड है। फेब्राइल एपिसोड क्या है, व्हेन द पेशेंट हैज फीवर और द एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब जब बुखार हो, उस टाइम में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसमें पता चल जाएगा। तो ट्रांसफर टू लेबोरेटरीज में विद इन 2 आवर्स एट द रूम टेम्परेचर एंड स्टोरेज प्रायर टू द प्रोसेसिंग इज शुड बी इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर में इंक्यूबेटर में देके इसको इंक्यूबेट करना है। In the next part, we are going to see what is sputum, collection of the sputum. So collection of the sputum contains that the container should be sterile, screw cap with white mounted bottle. All we have discussed earlier. Same चीज है, उसमें ही कलेक्ट करना है, बट इसमें पेशेंट प्रिपरेशन में कलेक्टेड आफ्टर डीप कप। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा थोड़ा खांसी है उसमें मतलब सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। पेशेंट को बोलिएगा कि मतलब पेशेंट इज टू बी आस्क्ड टू कफ डीपली, मतलब डीपली खांसने के लिए बोलना चाहिए, और जो स्पुटम कलेक्ट हो उसको लेना है। तो ट्रांसफर टू लेबोरेटरी विद इन 2 आवर्स एट द रूम टेम्परेचर, 2 घंटे के अंदर लेबोरेटरी में भेज देना है। स्टोरेज प्रायर टू प्रोसेसिंग, तो 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। In next part, the collection of the cerebrospinal fluid. We know that cerebrospinal fluid is present in the subarachnoid sphere of the brain and the spinal cord. तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, कंटेनर, स्टेराइल स्क्रू कैप, ट्यूब और द बोतल। तो these are looking like this, टेपरिंग एंड है और टेपरिंग एंड है। पेशेंट प्रिपरेशन, डिसइंफेक्ट स्किन बिफोर एस्पिरेशन, स्किन को डिसइंफेक्ट करना है बिफोर द परफॉर्मिंग द बिफोर टेकिंग द सैंपल। तो ट्रांसफर टू लेबोरेटरी, कीप इमीडिएटली एट टेम्परेचर, कीप इमीडिएटली एट टेम्परेचर, मतलब जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। स्टोरेज प्रायर टू प्रोसेसिंग 6 hours at 36 degrees Celsius. So in the next slide, the body fluid, that's maybe the pus or any other things, that the container should be sterile screw tube or anaerobic transport. Patient preparation, disinfect skin before aspiration, लेने के पहले disinfect करना चाहिए। Transfer to laboratory, keep immediately at room temperature, मतलब रूम टेम्परेचर में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रख देना चाहिए। स्ट्रेस प्रायर टू प्रोसेसिंग इज प्रिपेयर प्लेट एज सून एज रिसिप्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लेट प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इन केस ऑफ द नेक्स्ट इज द स्क्रैपिंग। इन दिस केस द कंटेनर इज एनारोबिक ट्रांसपोर्टर, एनारोबिक ट्रांसपोर्टर, स्किन स्क्रैपिंग एनारोबिक ट्रांसपोर्टर, रिमेंबर। तो पेशेंट प्रिपरेशन, डिसइंफेक्ट स्किन, डू नॉट अलाउ टू ड्राई, मतलब ड्राई होने से पहले ही सभी प्रोसीड्यूर करना है। ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी विद इन 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर, स्ट्रेस प्रायर टू प्रोसेसिंग इज ये 24 घंटा एट रूम टेम्परेचर। तो द एरोबिक ट्रांसपोर्टर इज लुक लाइक दिस, ये। So in this video, generally we are trying to cover the things that are under the collection of the proper collection of the blood
sputum, and all other things. So it is not a very important lecture, but in case of the SGT or SGL lecture, it is about to learn. So आज के वीडियो में इतना ही. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू. Hello friends, in this video we are going to discuss the part of the pharmacokinetics. So basically under the headings of the pharmacokinetics there are 4 parameter terms, that is the absorption, disintegration, metabolism and the excretion. In our last lecture we have discussed the definition of the drugs, pharmacology and the basic introductory part. So yeah, in this lecture we are going to discuss the absorption of the drugs. So what is the absorption of the drugs? तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं हमको क्या समझ में आता है? जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होना होता है ताकि पर्टिकुलर टारगेट साइट में जाके एक्शन कर पाए. तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू परफॉर्म some specific functions. Suppose XYZ पर्सन ने टेबलेट नहीं तो पेरेंटल इंजेक्शन किसी भी फॉर्म डोजेज फॉर्म में ड्रग्स को लिया तो ये अपना एक स्पेसिफिक रूट सिलेक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब होगा. तो एब्जॉर्ब होने के बाद भी ये पर्टिकुलर स्पेशली 2 फॉर्म में रहता है. एक अगर फ्री फॉर्म में रहेगा तो ये डायरेक्ट एक्शन से करेगा, और नहीं तो अगर किसी भी प्रोटीन के साथ अगर एल्बुमिन और अदर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा ताकि वो फ्री भी बन सके और बाइंड फॉर्म में भी रह सकते. तो फ्री फॉर्म में रहेगा तो जब भी रिकॉर्ड होगा इट विल बी come into action and perform its own function. So now coming to the point, what are the factors that influence the absorption of the drugs in the body of an individual? तो क्या क्या होता है? पहले तो हमको एक पॉइंट देखने को मिलता है pharmaceuticals and second point is the drug factors. Pharmaceutical factors will be dealing with the physical state, disintegration and the dissolution of the particle size. तो एक नंबर में देखते हैं हम physical state, 2 नंबर में disintegration, dissolution and the particle size. तो फिजिकल स्टेट में देखिएगा क्या होता है, जितना भी ड्रग्स होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डोज फॉर्म में आता है. जैसे कि लिक्विड फॉर्म में आएगा, नहीं तो सॉलिड फॉर्म में आएगा, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर्म्स दे आर अवेलेबल फॉर टू बी यूज्ड. सो फिजिकल स्टेट में देखेंगे हम सपोज कोई भी लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड वाला डोजेस ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा देन सॉलिड. तो टेबलेट से ज्यादा जैसे कि सिरप नहीं तो सस्पेंशन टूल वगैरह हम लेते हैं मल्टीविटामिन उससे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है. तो दूसरा पॉइंट में आता है डिसइंटीग्रेशन. तो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? सपोज कोई भी ड्रग लिया, ये टेबलेट लिया, तो टेबलेट लिया तो ये सब स्टोमक या नहीं तो जेआईटी में जाता है. तो जेआईटी में जाके ये छोटा 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 पार्ट में टूटता है. तो इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन. तो यहाँ पे भी कुछ शायद टर्म डिफाइन होता है जैसे कि डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम. तो व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन टाइम? इट इज formulation for the formulation, that means the drugs will be taken to break up into the smaller particles. तो टूटने में जितना टाइम लग रहा है बेसिकली उसको डिसइंटीग्रेशन टाइम बोला गया है. और व्हाट इज डिसोल्यूशन टाइम? तो ड्रग्स जो टूटा है मतलब छोटा छोटा पार्ट में टूटा है, एक सॉल्यूशन में आने में कितना टाइम ले रहा है? तो द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू गो टू द सॉल्यूशन. तो ड्रग्स टूट के छोटा छोटा पार्टिकल बना डिसइंटीग्रेशन टाइम का, तो वो पार्टिकल किस सॉल्यूशन में आने में कितना टाइम लगेगा उसको बोलेगा डिसोल्यूशन टाइम. तो नाउ कमिंग टू द particle size. So as you know that the smaller the size of the particle, there is a large surface area. So large surface area will promote the greater absorption. So particle size जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा absorption.
So now coming on for second factor, this is the drug factor. तो drug factor में क्या क्या देंगे हम? Lipid solubility and the water solubility. The solubility of the drugs is also a major criteria for its absorption. And second one is pH and ionization. So more is lipid soluble. Suppose this is the membrane in this culture. तो जितना ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन जो है बाइफॉस्फोलर। क्या आपके मुंह के आसपास कालापन है? क्या आपके गालों पर दाग धब्बे हैं? इसे पिगमेंटेशन कहते हैं और ये स्किन की अंदरूनी लेयर्स में होता है। इसे परमानेंटली हटाने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया गया स्किन केयर किट ही यूज करें। क्योर स्किन ऐप पर हम डॉक्टर्स आपकी स्किन को स्टडी करते हैं और आपके लिए बनाते हैं एक कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट किट। इसे आप पा सकते हैं 3 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कीजिए। स्टेप 2, ऐप पे अपने फेस की फोटोज क्लिक कीजिए जिससे आप पाएंगे एक फ्री स्किन एनालिसिस। हम डॉक्टर्स आपकी फोटो को स्टडी करेंगे और आपके लिए बनाएंगे एक पर्सनलाइज्ड स्किन केयर किट। यही नहीं, हर महीने हम डॉक्टर्स आपका स्किन चेकअप करेंगे जो आपकी स्किन को हेल्दी और बेदाग बनाने में मदद करेगा। इंतजार किस बात का? क्योर स्किन ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। तो लिपिड लेयर हो रहा है उसमें ज्यादा क्रॉस कर पाएगा लेकिन जितना वाटर सोल्यूबल होगा तो उतना इसको रिपेल कर देगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो नाउ कमिंग टू what is the role of the pH and the ionization in case of the absorption of the drugs? To pH. Strongly acidic. Suppose strongly acidic. Heparin and extremely basic aminoglycosides.